Hello students, this video is for grade LKG. Let us start. We have 3 different parts in this sheet in which we will get to know about 3 different subjects which are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject which is of English. The question is, circle the correct opposite word. In this we have to circle the correct opposite word. Okay, जो सही opposite word है उसको circle करना है. Opposite word मतलब उल्टे शब्द. Means जो भी word दिया है उसका उल्टा क्या होगा वो ही आपको यहाँ पे circle करना है. So the word is happy. Word है happy मतलब खुश. So happy का opposite word क्या होगा? Happy का उल्टा sad, दुखी, दुख, sad, S-A-D, sad. Speak with me. H-A-P-P-Y, happy. Opposite word of happy will be sad. S-A-D, sad. So we will circle on the word sad. Next one, full. F-U-L-L, full मतलब पूरा भरा हुआ. ओके, कोई ऑब्जेक्ट में कोई चीज है तो वो पूरी भरी हुई है, दैट इज कॉल्ड फुल. उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा फुल का? भरे का क्या होगा? खाली. एम्प्टी. E-M-P-T-Y, empty. Full, empty. F-U-L-L, full. E-M-P-T-Y, empty. Third is night, मतलब रात. N-I-G-H-T, night. Night का उल्टा day. Opposite of night is day. D-A-Y, day. D-A-Y, day. N-I-G-H-T, night. Opposite of night, day. D-A-Y, day. So in this way, we have to circle on the correct opposite word for each word. Okay, हर word के लिए उसका correct opposite word को हमें circle करना है. You will circle the correct one. Now, let's move to our next question, which is of English only. The question is, make 2-letter words ending with IT. Okay. It's mistake over here. It will be 3-letter. Okay, 3-letter का word बनाना है जो IT से end हो. Means यहाँ पे जितने भी वो दिए हैं blank, उसमें क्या fill करना है? IT. It. Like S दिया है, S के बाद space है, तो we will fill IT. It will become sit. S-I-T. Sit. मतलब बैठना. S-I-T. Sit. W-I-T. Wit. B-I-T. Bit. K-I-T. Kit. H-I-T. Hit. F-I-T. Fit. L-I-T. Lit. P-I-T. Pit. S-I-T. Sit. W-I-T. Wit. B-I-T. Bit. K-I-T. Kit. H-I-T. Hit. F-I-T. Fit. L-I-T. Lit.
P-I-T, pit. So, we have learned 3-letter words ending with IT. Let us start our next section, which is of maths. The question says, complete the pattern. In this, we have to complete the pattern by putting the correct object in the given space. Correct object को space में put करके pattern को complete करना है. So, शुरू में आपको pattern दिया हुआ है, उसी basis पे आपको इसको complete करना है. पहले क्या है? First picture is of heart, then star, again heart. कैसे है? मतलब पहले दिल का है शेप है, फिर स्टार शेप है, फिर से क्या है? हार्ट का शेप है. उसके बाद क्या आएगा? What will be after that? It will be star. Okay. After heart, it will be star. See the next. You can see 2 सर्कल्स आर गिवन. यहाँ पे 2 सर्कल्स दिए हुए हैं. उसके बाद क्या है? एक बॉक्स है. ओके, 2 सर्कल्स हैं, एक बॉक्स है, उसके बाद अगेन एक सर्कल है, फिर स्पेस है, और स्पेस के बाद क्या बना है? बॉक्स. सो वी विल पुट 1 सर्कल हियर. यहाँ पे एक और सर्कल लगा देंगे ताकि पैटर्न फॉलो हो. फिर बॉक्स के बाद एक स्पेस और है, उसमें भी हम एक सर्कल और बनाएंगे ताकि पैटर्न कंप्लीट हो जाए. 2 circles, 1 box, 2 circles, 1 box, 2 circles. Understood? In this, what we will do is we will simply complete the pattern. क्या करेंगे? सिटी के हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे. ओके, अगर 2-2 करके दिया तो हम 2-2 का बनाएंगे, अगर 1-1 करके दिया 1-1 बनाएंगे. अंडरस्टूड? इन दैट वे वी हैव टू कंप्लीट दिस pattern. Now, let us move to our last section, which is of EVS. Write the names of any 5 flowers. Okay, so I have already told you about 5 names of flowers. मैंने आपको last video में भी 5 flowers के बारे में बताया था. 5 names of flowers. Let us recall. Rose. R-O-S-E, rose. Lotus. L-O-T-U-S, lotus. Marigold. M-A-R-I-G-O-L-D, marigold. Lily. L-I-L-Y, lily. Speak with me. L-I-L-Y, lily. And the last one, jasmine. J-A-S-M-I-N-E, jasmine. Or you can write pansy. P-A-N-S-I-Y. Okay, P-A-N-S-Y, pansy. So these are the name of 5 flowers. You can also write hibiscus, sunflower, dahlia, mogra. Okay, these are also a few flowers name. I hope you all have understood this sheet very well. But if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Okay? Thank you.